ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡି ଯାଦବ ଇନ୍ଦୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 1 ଫେବୃଆରୀରୁ 5 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ 4th ୱାକୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ବିଲ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 19ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 14ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତରୁ 500 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୋଟ 37 ଜଣ ଖେଳାଳି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ 10 ଜଣ ଖେଳାଳି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଥିଲେ। ବଡ଼ବିଲ୍ର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 6ଟି ଗୋଲ୍ଡ, 4ଟି ସିଲଭର ଏବଂ 10ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଭାରତ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବଡ଼ବିଲ୍ ଫେରିବା ପରେ ବିଜେତା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରସାଦ ତଥା ବଡ଼ବିଲ୍ର ଗୁରୁଦ୍ୱାର କମିଟିର ଦୟାଳ ସିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମନଜିତ ସିଂ କହିଲେ ଯେ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତା ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାର କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ଏସୋସିଏସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ଡାକୁଆ ଏବଂ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନରେ ବଡ଼ବିଲ୍ର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଖେଳପ୍ରେମୀମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ମାନ ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବେ। चंद्रगुप्त प्रसाद, मैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के स्टेट कन्वीनर। अभी हाल ही में हुए दिल्ली में इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारे उड़ीसा से 37 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से कि हमारे केवंझर जिले से 10 बच्चे भाग लिए और बहुत ही अच्छा खेल प्रदर्शन करते हुए हमारे उड़ीसा के लिए 19 मेडल जीत के लाए। और खास करके केवंझर जिले के बड़बिल शहर से बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और बड़बिल का नाम रोशन किया, तो मैं इनके कोच के सहित सारे बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बड़बिल का नाम इसी तरह से आगे भी रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दयाल सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी में भी, खेल कूद में भी हिस्सा ले रहे हैं और किक बॉक्सिंग में जो अभी जीत के आए हैं, ये बच्चों को मैं अपनी तरफ से और कोच को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए, और कामना करता हूँ कि इससे भी अच्छा और प्रदर्शन करें और हमारे बड़बिल, केवंझर और उड़ीसा को गौरवान्वित करें और नाम ऊंचा करें और आगे चल के अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें और फिटनेस में अपने को एकदम ये रखें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बॉडी भी फिट होना चाहिए। इसमें स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। तो मैं शुभकामना देता हूँ इनको, इसी तरह ही अपना लगन से लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। केन्दुझर बड़बिल्लू सजाद आलम का रिपोर्ट, एवान ओडिशा।